So hey guys, welcome back to the channel M.O.P rider. So in this video I'm gonna show you guys how I fixed KTM handlebar on my NS200. अगर वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो और जो राइडिंग है उसका भी मैं वीडियो आपको दिखा दूंगा जो मैंने अपने GoPro से शूट किया है. तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दो गाइस. So let's start the video. So this is how I fixed my handlebar on the NS200. So I have used the original handlebar. As you can see here, it's original handlebar and this holder is as well original. So the painting is not that great, मतलब फिनिशिंग बराबर नहीं है तो वो रहने देते हैं. तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे दो रबर का जो माउंट रहता है वो यूज़ किया. उसके अंदर मैंने एक मेटल का जो बोल्ट है वो भी लगा दिया सो दैट व्हेन वी टाइटन द बोल्ट दिस डजंट गेट कंप्रेस्ड, बोथ द साइड सेम. और नीचे जो है मैंने एक यहाँ पे बोल्ट लगा दिया उसको और एक वॉशर है और एक बोल्ट भी है इसके साथ, तो ये फुल टाइट है. आई हैव रिमूव्ड बोथ द मिरर्स एज वेल क्योंकि इसमें अच्छा नहीं लग रहा है. एज यू गाइस कैन सी हाउ इट लुक्स लाइक. और राइडिंग का जो है वो भी आपको मैं अभी दिखा देता हूँ. सो आई गेस लेट्स गेट इनटू द राइडिंग वीडियो. So this is how overall it looks like. So that was it for this video. अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो और वीडियो जितना हो सके उतना शेयर कर दो. मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय. नेक्स्ट वीडियो दिखेगा. बाय.